हेलो एंड वेलकम बैक। क्योंकि आपने मेरी शायद कुछ वीडियोस पहले देखे होंगे जिस इन माय चैनल व्हिच इज नेम लाइफस्टाइल 360, सो मैंने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू गेट माई सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल ऑफ यू टू मेक अ वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। तो दो ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो होना चाहिए था, बट आई थिंक नाउ आई एम मोर कंफर्टेबल यूजिंग यूट्यूब बिकॉज अर्लियर मुझे एक्चुअली कैमरे का एंगल ही समझ नहीं आया करता था, वेयर टू लुक एंड वेयर टू टॉक, विद होम टू टॉक। आई वॉज वेरी नर्वस। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग टू यू एंड टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। टू स्टार्ट विद आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बॉर्न एज ओमप्रीत नांद्रा। शादी के बाद मैंने अपना नाम ओमप्रीत नांद्रा राय बताना स्टार्ट कर दिया। ऑफिशियली आई हैव नॉट चेंज माई नेम ऑन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सो फार। इनफॉर्मली आई ऑलवेज कीप बोथ माई सरनेम। मेरा नाम ओमप्रीत कौर नांद्रा था, जो आज भी मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वही है। कहाँ मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, इट्स लाइक आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। दैट्स माई फादर एंड दैट्स माई मदर। फादर आपने जैसे देखा मेरे बहुत ही ट्रेडिशनल सिख फैमिली से हैं। ही वेयर्स टर्बन एंड फॉलोज ऑल दैट सिख रूल्स इन द हाउस। बट मेरा बर्थ भिलाई छत्तीसगढ़ का ही है। माई फादर वॉज इन भिलाई स्टील प्लांट। एज सब जानते हैं स्टील प्लांट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द रशियंस and all over India it's around 4 plants. My father, my uncle which is my चाचा जी और मेरे दादाजी भी स्टील प्लांट में ही थे way back in I think 60s or 70s I believe. और अगर आप बैक जाते हैं, we belong to जालंधर पंजाब। फिर फैमिली माइग्रेटेड टू भिलाई बिकॉज ऑफ द स्टील प्लांट। फिर वहीं से वी ऑल आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप। बर्थ मेरा भिलाई छत्तीसगढ़ का ही है। मैं वहीं पे पढ़ी हूँ 12th तक। फिर मैंने इंजीनियरिंग बिलासपुर से की है। दैट आई कम बैक टू व्हाट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। तो और मैंने कहाँ से पढ़ाई की ये मैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में कवर करती हूँ। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आज की भिलाई और पुराने भिलाई में, बिकॉज शुरू से ही दैट हैज अ कल्चर ऑफ दैट सेक्टर्स, जस्ट लाइक जैसे चंडीगढ़ में है वैसे ही हमारे यहाँ पे भी सेक्टर्स। क्योंकि हम स्टील प्लांट के क्वार्टर्स में थे, दैट वाज अ बिग क्वार्टर। दैट्स माय हाउस, जिसके साथ बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। आई थिंक आई एम बोर्न इन दिस हाउस ओनली एंड माई फादर गॉट माइग्रेटेड टू दिस पर्टिकुलर हाउस इन 1982 or 1980 or 82. It's very close to my heart. I just love that place. सबको अपना घर प्यारा होता है। Moving on to my education. 12th तक तो हमने स्टील प्लांट के जो schools होते हैं, they are called BSP schools. Every sector has a kindergarten school, primary school, high school. वैसे ही मैंने सेक्टर 10 से पास आउट किया। 12th मैंने की थी मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से, एंड देन आई took admission in engineering in electronics and communication in Bilaspur. There are three universities at that time. मैंने Institute of Technology गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है way back in 2006. Those were the best days of my life because एनीवेज इंजीनियरिंग वैसे ही बहुत इंसान को बहुत रफ बना देती है। और मैं कभी भी इससे पहले घर से बाहर नहीं रही थी। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस without parents. There I started the journey out of my house and since then I have never been back to my house like for a whole year because 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। So how it started for me is another chapter which I'm going to cover next. बैक देन जो हमारा यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है, बट एट दैट टाइम इट वाज अ हाफ लाइक ऑटोनमस यूनिवर्सिटी। सो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे टीसीपी नहीं होता था। टीसीपी मीन्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, वो नहीं होता था। वी हैड द ऑप्शंस टू गो फॉर ओपन कैंपसेस इन सेंस किसी और कॉलेज में विदिन छत्तीसगढ़ अगर किसी भी कॉलेज में कोई किसी ट्रेनिंग या प्लेसमेंट सेल ने किसी कंपनी को इनवाइट किया है फॉर लाइक कैंपस सिलेक्शंस, तो उसमें वी वर एलिजिबल टू टेक पार्ट। एट दैट ईयर इन 2005 वी गॉट टू नो कि छत्तीसगढ़ में ही भिलाई में ही देयर इज अ रूंगटा कॉलेज में वहाँ पे ओपन कैंपस है। तो देयर वर 2 or 3 कंपनीज कमिंग इन, सो वी ऑल वेंट। तो वहाँ पे ही मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड आई वाज द ओनली वन इन माई बैच हु गेट सिलेक्टेड इन कैंपस दैट डे. It was a painful process. So talking step by step about that is, but उनका पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया यही था कि अभी तक के आपके जितने 8 सेमेस्टर्स होते हैं इन इंजीनियरिंग,
हर पेपर में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यू शुड हैव क्लियर्ड दैट पेपर. यूजुअली जो भी इंजीनियरिंग करते हैं उन्हें दे विल बी एबल टू रिलेट इट. उनको किसी को भी पेपर में बैक नहीं होना चाहिए. बैक इन सेंस यू शुड नॉट हैव फ्लंक्ड एनी ऑफ द पेपर. दैट वाज देयर फर्स्ट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट. वी वेंट देयर फॉर द कैंपस सिलेक्शन इन 6th सेमेस्टर. जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है आफ्टर ईयर यू आर गिवन अ स्लॉट in any company wherever you're selected, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. For me, I was selected and I got my appointment letter in November 2005. And then I have to appear in my 7th and 8th semester were left. उसमें भी उनका यही क्राइटेरिया था. इवन दो यूर सिलेक्टेड बट योर जॉब इज स्टिल नॉट सेफ, या आपका 7th और 8th सेमेस्टर में कोई बैक नहीं लगता है. हैव टू क्लियर योर 7th एंड 8th सेमेस्टर रिमेनिंग सेमेस्टर्स ऑफ योर इंजीनियरिंग in a very first attempt. So that was all done and I finally joined my first ever company and my professional journey started way back in 2006. Now कैसे मेरी journey start हुई, what I am doing right now and मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, that is whole lot of big like 14 years of experience which I would like to sum up in very short. 2006 में when I started we were asked to join as the fast track batch. कई बार वो bench in sense those who are not actually working on project but waiting for projects. तो वो bench create करने के लिए भी कई बार hiring होती है और कई बार ऐसी hiring होती है कि the project is already in their hands, like some formalities are left. 2-3 महीने में project start हो जाएगा and they hire the team. Either they hire freshers or they hire the laterals. Laterals मतलब जिनको पहले experience रहता है उनकी हायरिंग होती है, या फिर फ्रेशर्स की हायरिंग करके दे हैव द अमाउंट ऑफ टाइम वेयर दे कैन ट्रेन देम इन द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी. सो द सेम वे इन 2006 आई वाज हायर्ड एंड वाज ट्रेन्ड इन SAP. सो जिस दिन हमने ज्वाइन किया उसके नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हमें बताया गया कि यू विल बी ट्रेन्ड इन SAP बिकॉज ऑफ सो एंड सो प्रोजेक्ट एंड द ट्रेनिंग बिगैन. And I was like so pissed because मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से थी और इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जिसमें हमें हार्ड कोडिंग करनी थी. And my first day started with the coding, that ABAP coding, and it was like oh my god. So anyways कैसे भी करके there's no option because even I did not like it. I got the salary at the end of the month and it felt really good. That was my first salary. वो ट्रेनिंग तो complete हो गई and I was like always praying to God कि कुछ भी करके प्लीज मुझे इस कोडिंग वाले पार्ट से बचा लो. I can do anything else but no codings please. अच्छी बात ये हुई कि जैसे ही हमारी वो ट्रेनिंग खत्म हुई, that was a basic ABAP training, we got 3 options. इधर आप ABAP में रह जाइए या business intelligence you have to choose or you have to choose the basis. Basis is more on the SAP sides, networking kind of, like all authorization, security and everything. So one thing was basis में they preferred more boys because वो बहुत ही time constraint का problem रहता है. Like most of the work is on nights because अगर आपके server shut down है या कोई patch update हो रहा है, that has to be monitored and it's a like night job because वो काम तभी हो सकता है जब no one is working on the server. So दिन में तो नहीं हो सकता, mostly nights or weekends का काम है. So we don't prefer, but it is not limited to boys. So if anyone wants to have it, and preferably Java experience was needed at that time. SQL and Java experience was needed to do the basis work. It was like, I don't know Java, I don't know SQL, I am not going to basis. I don't want ABAP. The only part left is business intelligence. मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था. What is business intelligence? क्या आप उसको लेके क्या करने वाले हैं? Where your career will go? No idea. I just opted and I just held my hand high कि मेरे को business intelligence में जाना है. Okay, from tomorrow onwards, 1 week of your business intelligence training will start. So that day I went back home and I just studied about business intelligence में करना क्या है. So what was business intelligence? Business intelligence was learning the business. Whatever company you work for, like अगर आप construction का project कर रहे हैं, you have to know their business and give them the reports which the company needs to manage or maintain that business. You know, एक business के बहुत सारे modules होते हैं. It will have logistics, it will have purchase, it will have sales, it will have procurement, it will have inventory, it will have finance and what not. It will be interesting because you get to know the business, different types of business कि कैसे वो करते हैं काम. But it has to be in SAP क्योंकि
that business has to run in SAP. That business has to have the SAP software जिसमें वो अपने बाकी सारे processes maintain करते हैं. So it was knowing the business in SAP terms. And until now, I am working totally in SAP Business Intelligence. Ironically, मेरा काम always from the day I started my work was very analytical. In my personal life, I am not at all analytical. If I go for a shopping, for example, and my need is to get a white shirt, I just go and buy it. I don't analyze on the fact that वो इतना measurement होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, it should be this white, it should not be off white, it should not be this brand, it should not be that brand, I want this type of thread counts. No, my personal life says be as cool as possible. White shirt means white shirt, ये वाली हो या वो वाली हो. But my work says no, be very specific on that. So, but it's good. It keeps my work interesting because आज तक in like last 14 years, hardly मैं कभी अपने काम से बोर हुई होंगी. Only because I was never analytical in my personal life. My work taught me to be more analytical in my personal life, which is sometimes good. So, moving on to the next step. That was all I started with, and now we'll talk about how I landed up in America. Step by step, I changed my first company and I moved on to Noida in 2010 February. That was my second company. Then I moved to the third company within Noida in 2011 because I did not like the culture of my second company. And in 2011 till 2018, 2017, I was in Noida working with my company number 3, and there I got the opportunity to have an H-1B visa, travel to America, to USA, and I grabbed that opportunity. H-1B visa it's a high skilled visa in America. उस visa को लेने के लिए there are lot of IT guys, lot of IT people who are actually waiting for that opportunity. So you have to prove yourself year by year. At least मेरे साथ तो यही हुआ that I have to prove myself I am capable of doing it. So मुझे ये लगता था क्योंकि मैंने बहुत पहले से हमेशा मैंने अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ ही काम किया. Before that I went to Australia as well for one of my clients, but that was a short visit. So since I worked mostly, almost 90% of my work was always with American clients, I wanted to see what the culture over there, क्यों उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है ऑफशोर में, and why do they need us to work when they know the business, what's the problem, and all that factors. I wanted to go and I want to visit the site, I want to see the plants, I want to see whatever, because mostly जो SAP or ERP है, that's applicable those businesses who are basically manufacturing energy, जहाँ पे भी plant होगा. I just proved that yeah, I wanted to go, I can handle wherever I'll go, I'll handle the client, and everything I'll do is like by myself. So somehow I got a chance in 2016. So that's a process. Every year in April, H-1B का lottery system होता है. That lottery is being picked here. So companies worldwide, they opt for, वो अपने 8-10 जितने भी resources होते हैं उनका नाम suggest करते हैं that lottery. And US जो department होता है, that USCIS, which is called US Citizenship and Immigration Services, start the lottery in April. First week में they pick up the names जिनको भी करना होता है. I think 40,000 is the limit. 40,000 worldwide from all the companies, IT companies वो H-1B visa उठाते हैं. Those 40,000 people are given the opportunity to travel. So सिर्फ वही lottery pickup is not the option. Lottery pick होने के बाद by June or July they send a confirmation to your employer कि आपका so and so resource has been picked, and फिर petitions आती हैं and there is a lot of paperwork. Yeah, once you are selected for that visa in the lottery, there's another step. अगर आपकी requirement है किसी project पे, so before traveling to America, you have to go to the embassy, the American embassy, and they stamp that H-1B visa on your passport. Using that visa, you can travel. So stamping एक बहुत बड़ा step है. The day the visa will be stamped, from then onwards, your visa, H-1B visa will be valid. So मैं यहाँ आ गई H-1B visa में, and more funny part was I came here only for 48 days. I joined, 48 days were done.
I came with my family here. Fortunately, my client liked my work and they said, okay, we still have the opening. It's this because that's an implementation project. It's going to be for like years. H1B पे ही मैंने अपना employer switch किया. The client asked कि, what if we want to hire you? I said, okay. I have no problems. I just have to discuss with my family and if they are okay to stay back with me, because my husband had a business in India and he just came here just for like 48-50 days and he stayed back with me for 6 months. I came back home and I discussed with my husband and my parents, my in-laws, yes, they offered me, and that's a good pay and it's good for everyone, but I don't have any like hard and fast rule that I want to stay here, otherwise I'll be no more. So sabne kaha nahi, it's good opportunity for your career, you have to decide you want to. So everything settled down, paperwork was done, and then I joined this current employer in America in February 2018, and since then I'm working with the same company. The only drawback I have is this company has no existence in India. So even if I ever decide to go back to India, I have to change the employer, I have to seek for another job, and that was a calculated call we took. So this is how I landed here in America, and so far it has been a fun journey. थोड़े से ups and downs सबके साथ लगे रहते हैं. So what I do exactly in my current employment is, back in India when I left India and I came here, I was a project manager and a people manager, and my role is of an analyst. यहाँ true work analyst का exactly मैंने देखा कि what analyst does. So I joined a manufacturing company. So manufacturing का each and every process you have to be aware of. कोई process में change होता है, that process owners come back to you, because I am a business intelligence analyst. I'm not a business analyst. No, there's a difference between business analyst and business intelligence analyst. It's because I am an IT analyst and those people are business analysts. So वो analyze करते हैं business processes. I use that process and jumble up data from different areas and create a report out of it. So that's my work. So I have to analyze each and every module and need to know, okay, you want to see what my profit is, or like how can I grow my profit, what's the trend of my sale and XYZ. I have to analyze each and every process, years of data. How can I show them so that they can have a more broader analysis of their own business. So that is my work and I love it because you have to do a lot of brainstorming. So मेरा ज़्यादा time जो मेरा 8 से 9 घंटे का जो time होता है, that 9 hours is actually 9 hours of work, जिसमें आप 4 से 5 घंटे आप कम से कम बात करते हैं लोगों से, और बाकी की 4 से 5 घंटे आपको डिजाइन बनाना होता है, understanding that process, knowing that, and connecting the dot between different areas, and then create a design or module design of a report or something, so that you can present that analysis to the business now, back to business. So it's a difficult job because बहुत ज़्यादा brainstorming लगती है. It's a kind of intelligent job because that is why that's called business intelligence. You have to have the intelligence of the business, their processes, and the tool on which you are going to create a report. So मेरा SAP business intelligence is a tool, but the work is of analyst. So along with that, I have to manage the external resources, उनका work distribution, उनका time distribution, उनकी छुट्टियाँ, what are they doing, their percentage of work that has to be assigned to. There's a lot of work. Hectic. At the end of the day, after talking for like 5 hours in a day, I don't want to talk to anyone after like 5:36. और क्योंकि मेरा काम mostly analytics ही था, so I got interested in the tool, YouTube tool, and I really wanted to see how it works. So मैं बहुत fascinate हो जाती थी जब भी मैं देखती थी कि even your shot is short, like multiple times, उसमें breaks होती हैं, there are a lot of editing has to be done. वो editing होती कैसे? So the only way to know that is when you actually work on that. It is very fascinating to work in YouTube. You record that session and then you edit it and then you let others know or let others see what you did as a complete picture. With that note, I think I have shared a lot with you what I
what I was, what I am. I hope आपको अच्छा लगा हो, और इसकी और मैं डिटेल वीडियोस बनाने का प्लान कर रही हूँ टू गिव एन आइडिया कि अमेरिका में कैसे आया जा सकता है, what's the life in America, or what are the prerequisites when you come to America. So I'll cover those topics in my following videos, and if you really liked it, do comment me. I'll try to answer the questions if you have any. I'm happy to help those who really are seeking to come to America. I will like to talk about that. So goodbye, and take care of yourself.